Hello and welcome. Welcome to the sixth learning session of chapter number one of Science 1, which is gravitation. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered so far. First, we looked at gravitation, which is a force with which the earth pulls every object towards its center. Then we revised Newton's laws of motion. The first law said that any object in a state of rest or in a state of uniform motion in a straight line will remain to be in that same state of motion unless and until it is acted upon by some external unbalanced force. That was your first law of motion given by Newton. The second law of motion given by Newton says rate of change of momentum is equal to force. And the equation that you need to remember is force is equal to mass into acceleration. The third law said that every action force has an equal and opposite reaction force, and both of them act simultaneously. That was Newton's third law of motion that we had revised. Then we looked at Kepler's law. The first Kepler's law said that the sun is at the center and the planet moves in an elliptical orbit, right? The second Kepler's law was the line joining the sun and the planet sweeps equal areas in equal amount of time. And the third law said that the square of time period is proportional to the cube of average distance between the sun and the planet. These were the three Kepler's laws that we had studied. Then we looked at Newton's universal law of gravitation. Its formula was force of gravitation is equal to capital G, which is the universal gravitational constant, multiplied by product of masses of the two objects m1 into m2 divided by the distance square of distance between the two objects center of mass, square of the distance between the two objects center of mass. That was universal law of gravitation, and it applies to every object in this universe. Every object attracts every other object according to this formula. Then we had looked at some numerical problems based on gravitational force between two bodies. Then we saw Earth's gravitational acceleration. Because there's a force using Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. Because of force, there is some acceleration. So whatever acceleration is there because of Earth's gravitational force is called as acceleration due to gravity. It is denoted by small g, and its value on average is 9.8 meters per second square. You need to remember that value. Then we looked at variation in value of g, right? It does not remain constant everywhere. So in the equators, because the distance from the center of the earth is high, because our earth is not exactly a sphere, it bulges from the center, it is flat from the top and the bottom. So when it is near the whenever an object is near the equator, it is farther away from the center of mass, hence its value of g will be less. If you move to the poles, its value will be high. As you move above the surface, as you increase the height of the object, the value of g is going to reduce, and as you go inside the earth, again the value of g is going to reduce. So it's not going to be constant everywhere. So we looked at all of these situations and the reasons behind them in variation in the value of g topic. Then we looked at the difference between mass and weight. What is mass? Mass is the quantity of matter, and it is going to remain constant wherever you go. Moon pe jao tum, edge of the universe pe jao, sun pe jao, Jupiter pe jao, mass is going to remain the same. What is weight? Weight is the force of gravity which acts on that mass. Right? Force is equal to mass into acceleration. So whenever you multiply any mass with the acceleration due to gravity, you get weight. ओके मास का यूनिट है केजीज, वेट का यूनिट है न्यूटन. पर जब हम दुकान में जाते हैं, दुकान में हम न्यूटन नहीं बोलते कि मुझे 4 न्यूटन पटाटा दे दो, मुझे 5 न्यूटन कांदा दे दो. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट नीडेड. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जनरली वी अस्यूम कि मास और वेट का मतलब सेम है, बट व्हेन यू आर स्टडिंग फिजिक्स, व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, तुम्हें वो डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा. आर यू टॉकिंग अबाउट मास केजी में, या आर यू टॉकिंग अबाउट वेट न्यूटन्स में? दुकान में जाओगे तो तुम बोलोगे वेट, बट तुम एक्चुअली बता रहे हो मास, और तुम यूनिट गलत बता दोगे, विच इज केजी. एंड फाइनली वी हैड लुक्ड एट फ्री फॉल. इफ द ऑब्जेक्ट has only one force acting on it, and that is Earth's gravitational force, then we say that that object is experiencing free fall. And हमने देखा था कि जब भी फ्री फॉल हो रहा है तो एयर के मॉलिक्यूल्स बीच में आने वाले और वो लोग अपवर्ड फोर्स डालने वाले, एंड हेंस एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में हमें कभी असली फ्री फॉल नहीं मिलता. ओनली इन अ वैक्यूम चेंबर यू गेट फ्री फॉल. वैक्यूम चेंबर यानी उसमें से एक चेंबर, एक बक्सा, एक बॉक्स जिसमें से पूरा का पूरा हवा बाहर निकाल दिया, उसको वैक्यूम चेंबर बोलते हैं. ओनली देयर यू विल गेट रियल फ्री फॉल.
otherwise there will be air resistance, air usko upar खींचेगा, and then it won't be real free fall, because in free fall only one force should be acting on the object, which is gravitational force. Any other force starts acting on it, it's not a free fall there. Okay, so these are all the topics that we have covered so far. Today we're going to look at gravitational potential energy. Potential energy we have already looked at, right? So we're going to see where it comes from and what do we mean by gravitational potential energy, and we'll look at escape velocity. So your objectives for today are going to be, students will be able to explain gravitational potential energy, and students will be able to derive and explain escape velocity. Derive करने आना चाहिए escape velocity अर्थ का कितना है. Okay, so those are your objectives for today. Let us begin with a use your brain power type of question given on page number 12. According to Newton's law of gravitation, Earth's gravitational force is higher on an object of larger mass. Right? Newton का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से अर्थ पे जिसका भी मास ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या है, मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. बराबर. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to an object with a lower mass? तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कम है, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास ज्यादा है, तो दोनों एक स्पीड से क्यों आते हैं? जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा स्पीड से आना चाहिए, जिसका मास कम है वो कम स्पीड से आना चाहिए. बट हमने इन द लास्ट लर्निंग सेशन वी सॉ दैट वीडियो, राइट, जहां पे एक फेदर को और एक बॉल को, हेवी बॉल and a very light feather, both of them are released at the same time in a vacuum chamber. Both of them fall at the same time, which means they have the same velocity when they come down, right? So अगर बॉल पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का और फेदर पे कम फोर्स लगा है ग्रेविटी का, तो बॉल पहले नीचे आना चाहिए, फेदर बाद में नीचे आना चाहिए. बॉल ज्यादा स्पीड से नीचे आना चाहिए, फेदर कम स्पीड से नीचे आना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता. In experiment in the last learning sessions video, we saw that both of them come together, which means both of them have equal velocity when they hit the ground. ऐसा क्यों हो रहा है? Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to think about the answer, and then we will see the answer. Okay, pause the video here, take how much of time you need to think about the answer, and then you can play the video and we'll discuss the answer. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and have thought about the question. Now let us look at the answer. Hint ये था कि acceleration due to gravity के बारे में सोचना था. Force दोनों पे अलग है, but acceleration तो same ही है, right? So that's what we have to explain in 4 points systematically. Okay. So here's the answer. The acceleration produced in a body under the influence of force of gravity alone is called acceleration due to gravity. I don't think I read that sentence very well. I'm going to read that sentence again. The acceleration produced in a body under the influence of force of gravity alone is called acceleration due to gravity. ये जो acceleration सिर्फ gravity की वजह से आता है उसको हम acceleration due to gravity बोलते हैं. और उसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर, राइट? तो किस किस पे डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ g डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास. किसका मास? अर्थ का मास. कैपिटल M इज ऑलवेज मास ऑफ अर्थ. एंड सेकंड रेडियस. यहाँ पे जो r है वो रेडियस है. किसका? अगेन रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ. तो इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता. सो इट इज इंडिपेंडेंट. देखो, डिपेंडेंट का ऑपोजिट होता है इंडिपेंडेंट. ओके, इन ऐड कर दिया स्टार्टिंग में यानी ऑपोजिट हो गया. तो डिपेंडेंट का ऑपोजिट इंडिपेंडेंट, जिस पे वो निर्भर नहीं करता. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, कि बॉल का शेप स्फेरिकल है एंड फेदर का शेप लीफ लाइक है. साइज, बॉल बड़ा है, फेदर छोटा है. मास, बॉल का वजन ज्यादा है, फेदर का वजन कम है. इन सब पे डिपेंड नहीं करता. ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मैटर एक्सेट्रा ऑफ द बॉडी व्हिच इज फॉलिंग. जो नीचे गिर रही है ऑब्जेक्ट, जो नीचे गिर रहा है ऑब्जेक्ट, उस पे उसके शेप, साइज, मास पे डिपेंड नहीं करता. ओके, एंड अगर दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी सेम होगा. एक्सेलरेशन सेम तो वेलोसिटी सेम. व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. कितना फास्ट वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं. तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा, इवन दो दोनों पे फोर्स अलग लग रहा है. इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? एंड दैट्स व्हाट मेक्स फिजिक्स सो कॉम्प्लिकेटेड. दोनों पे फोर्स अलग अलग लग रहा है, बट दोनों पे फोर्स अलग अलग लगते हुए भी दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है. दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, इसलिए दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा जब वो नीचे आएंगे.
That's how you break it down in a logical flow. Okay. Hence, your conclusion will be hence the object with greater mass and the object with comparatively less mass both will fall with same velocity. इसलिए दोनों एक साथ same velocity से गिरेंगे. Okay, it's a little counterintuitive. Counterintuitive यानी तुम नॉर्मली सोचोगे उससे थोड़ा अलग है, राइट? अगर फोर्स अलग अलग है तो अलग अलग स्पीड पे आनी चाहिए, बट वैसा नहीं होता. So that's your answer to that question. Let's move ahead and let's start looking at gravitational potential energy. So we have studied potential energy in our previous grade, right? It is known as the energy stored in an object because of its position, and that is known as potential energy, right? Position की वजह से जिस जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो अगर यहाँ पे बॉल ऐसे एक हाइट पे पकड़ा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन दिस गर्ल इज गोइंग टू लीव दिस बॉल then the ball is going to fall down. तो जो potential energy है वो kinetic energy में convert होने वाला है. What is kinetic energy? It is energy because of velocity. जिस भी object के पास velocity है हम बोलेंगे उसके पास kinetic energy है. Okay? So energy because of position, potential energy. Energy because of speed is kinetic energy. Right? तो यहाँ पे वो speed zero था, zero kinetic energy. But इस बॉल को लीव कर दिया तो नीचे गिरने लग गया. तो जो पोटेंशियल एनर्जी था पोजीशन की वजह से वो कम हो रहा है, और क्या इंक्रीज हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट? दिस एनर्जी इंक्रीजेस एज वी गो टू हायर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट? जैसे तुम लोग हाइट इंक्रीज करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा. क्यों? क्योंकि उतना जोर से नीचे गिर सकता है, राइट? जितना जोर से नीचे गिर सकता है उतना ज्यादा एनर्जी है उसके पास. तो जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना ज्यादा एनर्जी, ओके? क्योंकि उतना ज्यादा जोर से नीचे गिर सकता है. So as you go to higher heights, this potential energy is going to increase. We assume that the potential energy of an object of mass m at a height of h from the ground is mgh. ये फॉर्मूला हमने लास्ट ग्रेड में पढ़ा था. What is the formula for potential energy? Mass into acceleration due to gravity into height. So mgh. तो एक acceleration due to gravity जो small g कहाँ से आया? यहाँ से आया. Now you will understand कि g का वैल्यू कहाँ से और ये g यहाँ पे क्यों आ रहा है, ओके? So the formula for potential energy is mgh, mass of the object, acceleration due to gravity, और उसका क्या height है. And on the ground it is zero. अगर तुमने ग्राउंड पे कोई चीज रख दी है तो उसका हाइट जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हाइट जीरो डाल दोगे तुम लोग तो मास इंटू जी इंटू जीरो, एनीथिंग यू मल्टीप्लाई विद जीरो बिकम जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा. जो कुछ भी ग्राउंड पे रखा है उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो. जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी. सो ये सब था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट? Now let's move on to gravitational potential energy. Gravity यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गया? When the h is small, what is h? Height. When the height is small compared to the radius of the earth. Okay, small बोलेंगे तो किससे कंपेयर करके तुम small बोल रहे हो, right? When you say 1 लाख बहुत कम पैसे है, सो तुम्हें बोलना पड़ेगा, राइट? 1 लाख कम किससे कंपेयर करते हुए. अगर तुम बोलोगे कि एक क्लर्क के सैलरी के कंपैरिजन में काफी कम है, दैट्स नॉट ट्रू. क्लर्क का सैलरी 20-30,000 होता है. 1 लाख इज वेरी बिग फॉर दैट पर्सन. बट अगर तुम बोलोगे 1 लाख इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो लाखों करोड़ों पैसे है, तो उसमें से 1 लाख तो कुछ भी नहीं है. तो ऑलवेज हैव टू टेल कि किससे कंपेयर कर रहे हो तुम, तभी तुम बोल सकते हो छोटा या बड़ा है. ओके, बस मैंने बोला 1 लाख कम है या ज्यादा है तो मैं पूछना पड़ेगा किससे कंपेयर करो. ओके, सो हाइट इज when height is small, when it is compared from radius r of the earth, यानी रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6400 किलोमीटर्स. उससे कंपैरिजन में अगर जब छोटा होगा, we assume g to be constant and can use the above formula which is mgh. ओके, तो ये जो फॉर्मूला में g है, ओके, mgh वाले फॉर्मूला में g है, वो जी सेम रहना चाहिए, राइट? जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है तो जी भी तो चेंज होगा. हमने पढ़ा था, राइट, लास्ट लर्निंग सेशन में. एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, वो चेंज हो रही है. सो जैसे ये एच इंक्रीज हो रहा है, जी डिक्रीज हो रहा है. बट जब तक एच काफी स्मॉल है, हाइट काफी कम होगा, ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स. तो अगर तुम 1 किलोमीटर बोलो, 2 किलोमीटर बोलो, 10 किलोमीटर बोलो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. ये जो स्मॉल जी है वो सेम रहने वाला है. तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. But for large values of h, अगर हाइट बहुत ज्यादा होगा, the value of g decreases with increase in h, right? हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट भी तुम चले गए तो वैल्यू ऑफ जी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट अगर तुम कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक चले गए, ओके, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हाइट होगा तुम्हारा, देन तुम्हारा जो जी का वैल्यू काफी कम हो जाएगा, राइट?
for an object at infinite distance. What is infinite? Infinity का मतलब क्या है? Infinity is a very large quantity. Okay, सबसे बड़ा नंबर जो तुम सोच सकते हो, उस नंबर को हम इंफिनिटी बोल रहे हैं. ओके, इट्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. सो इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी बहुत ज्यादा दूर. ओके, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो. राइट, वो इतना दूर हो जाएगा अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं करेगा. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नहीं होगी. And Earth's gravitational force does not act on the object. कहाँ पे? Infinite distance away from the Earth. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be zero there. तो इसलिए क्योंकि जितना अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से, तो वहां पे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं. अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इस वैल्यू को हम जीरो लेंगे. ओके, सो इट्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में तुम्हें अगर सब कुछ कंसिस्टेंट चाहिए, फिजिक्स के सारे लॉ एक दूसरे से अच्छे से मैच होने चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तब हम उसका वैल्यू ऑफ जी जीरो ले लेते हैं. ओके, दैट्स व्हाट दे हैव सेड इन दिस पॉइंट. Thus, for smaller distances, that is smaller heights, the potential energy is less than zero, that is, it is negative. तो अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नहीं है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हम जीरो ले रहे हैं. तो जैसे ये पास में आएगा अर्थ के, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव ले लेते हैं. ओके, हेंस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव. कीप दैट इन माइंड. जैसे वो अर्थ के पास होगा, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव ले लेते हैं, ताकि सब कुछ कंसिस्टेंट रहे. और कॉमन सेंस, राइट, अगर दूर जाएगा तब उसको जीरो ले रहे, तो जैसे ही पास आएगा तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे. इजंट इट? तो इस लॉजिक से वो लोग ने क्या क्या डिसाइड किया? पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे विल ऑलवेज कीप एज नेगेटिव. ओके, हम लोग ये रूल बना रहे सो दैट एवरीथिंग फिट्स वेल टुगेदर इन फिजिक्स. ओके, so this is the formula for gravitational potential energy. Okay, so capital G, universal gravitational constant. Capital M, mass of earth. Small m, mass of object. Capital R, radius of earth, and h is the height of the object. Okay, so this is the formula for gravitational potential energy. अगर कम डिस्टेंस होगा, okay, हाइट बहुत कम है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे क्या? नो, you won't use this formula. You will use this formula. Okay, mgh, mass into एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू एच. बट हाइट अगर इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा है, ओके, समझो 500 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. एंड ऑल्सो सी यहाँ पे नेगेटिव साइन है. व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू, राइट, हम लोग अज्यूम करने वाले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होता है, तो पास में आके वो नेगेटिव हो जाएगा. ये लॉजिक से हम लोग उसको नेगेटिव हमेशा अज्यूम करेंगे. So is the formula for gravitational potential energy. You need to remember this formula. You will also come across escape velocity का formula. तो उसका भी formula याद रखना है. स्मॉल जी का भी फॉर्मूला याद रखना है. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का भी फॉर्मूला याद रखना है. तो बहुत सारे फॉर्मूलाज, देयर आर मेनी फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर. ओके, फोर्स ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला है, फिर स्मॉल जी का एक फॉर्मूला है, अभी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, ग्रेविटेशनल सॉरी एस्केप वेलोसिटी का भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे. सो मेक अ फॉर्मूला पेज इन योर नोटबुक, write down all the formulas in one page and try to by heart, and it's very easy to get confused. I'm telling you now itself. ये सारे फॉर्मूला सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो तुमको बहुत ज्यादा ध्यान से इसको बाय हार्ट करना है, बार बार बाय हार्ट करना है. ओनली देन इट विल बी क्लियर. और एल्स बोर्ड एग्जाम में तुम लोग कंफ्यूज होने वाला है. आई एम गिविंग यू इन राइटिंग. You will definitely get confused in board exam if you're not very careful. So write it in one page, all the formulas of this chapter, and revise them again and again. Okay, let's move ahead to escape velocity now. So this particular slide is very easy. Okay, I don't want to read each and everything and explain you all everything. What I wanted to do is pause the video here and read through the entire slide. Okay, and then I'll explain. I'm not going to read out each and every line. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and read the slide by yourself. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and have read the entire slide. And I'll quickly revise this slide में बोला क्या. Okay, let me increase the size. Okay, so what they say is when you throw a stone upwards,
वो ऊपर जाते नहीं रहता, राइट? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद वापस वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। इफ यू थ्रो इट विथ अ लार्जर वेलोसिटी, ओके, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया तो ज्यादा हाइट पे जाएगा, राइट? सो कितने हाइट पे जाके रुकेगा वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से वेलोसिटी से फेंका था। जो वेलोसिटी जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे उसको, द मोमेंट इट लीव्स आवर हैंड, उस समय पे जो वेलोसिटी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इनिशियल यानी पहले, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी वो कितना है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, राइट? तो अगर तुम ज्यादा जोर से फेंकोगे, ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे तो ज्यादा हाइट पे जाएगा। व्हाई? बिकॉज जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी उतना ज्यादा टाइम लगेगा अर्थ को उसका स्पीड कम करने के लिए, उतना ज्यादा टाइम लगेगा अर्थ को उसका स्पीड जीरो करने के लिए, उतना ज्यादा टाइम लगेगा अर्थ को उसको वापस नीचे खींचने में, राइट? इसलिए जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी उतना ज्यादा हाइट पे वो जाएगा। दैट्स व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, let's move ahead. we have seen in the we have seen above that the value of g, which is acceleration due to gravity, keeps decreasing as we go higher above the surface of earth. जैसे ही तुम्हारा हाइट इंक्रीज हो रहा है, तुम अर्थ से दूर दूर जाते जा रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते जाएगा, वो हमने देखा, राइट? Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up. तो जैसे ही बॉल ऊपर जा रहा है हमारा, ओके, जैसे ही हमारा बॉल या फिर स्टोन वॉट एवर यू आर थ्रोइंग, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उस पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होते जा रहा है। I'm going to repeat that point, okay? जैसे जैसे हम जो बॉल या पत्थर फेंक रहे ऊपर, as we are throwing that upwards, as it is going upwards, जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है बॉल या स्टोन, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसके ऊपर जो फोर्स है अर्थ का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, if we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity the ball is able to overcome the downward pull and can escape the earth forever and will not fall back on earth again. Okay, so we saw that अगर तुम ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। तुम इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हो, ओके, तो ज्यादा ज्यादा हाइट पे जाने लगेगा, और जैसे ही वो ऊपर जा रहा है वैसे ही उसका जो फोर्स, उसके ऊपर जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, वो भी कम होते जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है एक इनिशियल वेलोसिटी का, कि अगर तुमने उस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका तो वापस नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्यों? इतना हाइट पे पहुंच गया है कि उस हाइट पे फोर्स पुलिंग इट डाउनवर्ड्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो वापस नीचे आएगा नहीं। नीचे कब आता है और क्यों आता है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स, राइट? बट अगर तुम इतना जोर से फेंकोगे कि बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया और उस हाइट पे फोर्स पुलिंग डाउनवर्ड्स बहुत ही कम है, तो वापस नीचे ही नहीं आएगा, वो भाग जाएगा अर्थ से। और भागने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्केप, राइट? सो इट इज गोइंग टू एस्केप द अर्थ, अर्थ से भाग जाएगा हमेशा के लिए, एंड इट विल नॉट फॉल बैक ऑन अर्थ। एंड इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ओके, ऐसा कौन सा इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है जो अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को दे दोगे तो वापस नीचे नहीं गिरेगा? दैट्स कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। नाउ व्हाट वी गोइंग टू सी इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, एंड वील आल्सो सी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुम्हें एस्केप करना है तो तुम्हें कितना वेलोसिटी की जरूरत है। ओके, सो लेट्स सी द डेरिवेशन एंड यू शुड प्रैक्टिस द डेरिवेशन। ओके, आई have a feeling that it could be asked in your exam. Okay, so let us begin the derivation now. For an object of mass m, okay, we have an object जिसका mass है m, अगर तो surface of earth पे तो उसका kinetic energy क्या हो जाएगा? हाफ इंटू मास इंटू एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया, वी स्क्वायर यहाँ पे वी एस्केप डाला, देखो ई एस सी लिखा है नीचे, ई एस सी का मतलब क्या है? एस्केप। सो वी एस्केप द होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अज्यूम करो कि हमने ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी दे दिया, तो जब वो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहा है तब नीचे सरफेस पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी। इसलिए यहाँ पे वी स्क्वायर के पे वी एस्केप स्क्वायर लिखा। ओके, सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दिस विल बी द फॉर्मूला, राइट? माइनस, देखो ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, सो माइनस जी एम एम बाय आर, ये हमने जस्ट फॉर्मूला देखा।
सो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी को हम लोग E1 बोल रहे हैं। E1 क्यों, सरफेस ऑफ अर्थ पे टोटल एनर्जी, इसको E1 बोल रहे हैं। फिर बाद में हम कहीं और पे भी एनर्जी फाइंड आउट करें, उसमें E2 बोलेंगे। So on surface of the earth, the total energy E1 will be what? Kinetic energy plus potential energy. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा, राइट। सो बस इन दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे जो हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर लिखा है यहाँ पे लिख दिया, एंड यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। फॉर्मूला में प्लस है बट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, सो हियर यू हैव माइनस साइन एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Gmm/r। ओके, सो दैट्स योर E1। और ये E1 कहाँ पे है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ये टोटल एनर्जी। नाउ एट द सेम टाइम अज्यूम इफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, बहुत ज्यादा दूर है अर्थ के, तो कैसा दिखने वाला है ये फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, राइट। सो वी आर अज्यूमिंग दैट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी जीरो। ओके, सो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गया तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो तो हाफ इंटू मास इंटू जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बिकम जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला इज व्हाट, Gmm/r। तो Gmm/r, r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस इन्फिनिटी डाल दिया। एंड इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैड स्टडीड, राइट, व्हेनेवर देयर इज इनफाइनाइट sign in the denominator, the number becomes zero, whenever there's infinity in the denominator, the number becomes zero। तो kinetic energy भी zero, potential energy भी zero, where at an infinite distance from the earth। so surface of the earth पे ये total energy है E1, infinite distance from the earth पे total energy E2 क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा, राइट। तो अब तक हमने क्या ढूंढा, दो चीजें ढूंढी है, वी हैव फाउंड टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इन दोनों के हमारे पास वैल्यूज है, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस Gmm/r एंड जीरो। नाउ व्हाट विल डू इज विल यूज principle of conservation of energy। what does principle of conservation of energy tell? Energy can neither be created nor be destroyed, it can be only transferred from one form to another, right। इसकी वजह से जो surface of the earth पे एनर्जी है वो सेम एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगा, राइट। कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो टोटल एनर्जी है वही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी टोटल एनर्जी होगा, इसलिए E1 इक्वल टू E2 लिख देंगे। व्हाट इज E1, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस Gmm/r एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया E2 क्या है, जीरो आ गया। नाउ यहाँ पे जो माइनस Gmm/r है उसको राइट साइड में ले लो, सो प्लस Gmm/r हो जाएगा। एंड व्हाट यू नोटिस यहाँ पे भी स्मॉल m है, यहाँ पे भी स्मॉल m है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्मॉल m, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड। सो व्हाट यू विल गेट इज हाफ वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज, व्हाट यू विल गेट इज वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r। अब ये स्क्वायर है, तुम्हें वी एस्केप ढूंढना है, सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो स्क्वायर रूट यहाँ पे हट के वी एस्केप आ जाएगा, एंड यहाँ पे RHS में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 2 Gm/r। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू सम, वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल ट्रिक। ये भी एक फॉर्मूला है वी एस्केप का, बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, राइट। we also have a square root sign, we have a numerator, we have a denominator, बहुत complicated है ये formula, so we'll try to make it easy। कैसे easy बनाएंगे, एक ट्रिक से, you multiply divide by r in the square root sign, उससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक r आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। बट Gm/r स्क्वायर क्या है, Gm/r स्क्वायर स्मॉल g का फॉर्मूला, एंड हेंस आई एम टेलिंग यू यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद फॉर्मूलाज। ओके, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r, एंड स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है, Gm/r स्क्वायर। So they look very similar, but these two are different formulas. This is your gravitational potential energy Gm/r, is your acceleration due to gravity Gm/r squared। You have to be very careful with the formulas. Okay? So इससे क्या हो जाएगा, Gm/r squared की जगह पे मैं g लिख पाऊंगा, तो मेरा v escape velocity क्या हो जाएगा, 2gr, square root of 2gr, right? तो अभी ये काफी सिंपल फॉर्मूला, राइट। So this is the formula for v escape। v escape is equal to square root of 2gr, and now you can find the value of v escape for earth। अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर जाना है, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जाना है, अर्थ को एस्केप करना है, अर्थ से भाग जाना है। अगर तुम लोग को अर्थ पे बहुत बुरा लग रहा है और तुम लोग अर्थ से बाहर जाना है, अर्थ से भाग जाना है, तो तुम्हें कितना वेलोसिटी लगेगा,
and calculate that using this formula. 2 वैसे का वैसा, g is 9.8, radius of earth is 6.4 into 10⁶ meters, right? So इसको calculate करके 11.2 kilometers per second आ जाएगा. Also this you need to remember this value, okay? What is the escape velocity of earth? It is 11.2 kilometers per second. Also it is kilometers per second. तो कितना fast है ये सोचो तुम जरा. It's like चेंबूर से लेके साकीनाका में मैं 1 सेकंड में पहुंचूंगा. चेंबूर से साकीनाका 1 सेकंड में. That's how fast you have to be. ओके बहुत ज्यादा हाई स्पीड है. 11 किलोमीटर 1 सेकंड में, मोर देन 10 किलोमीटर इन 1 सेकंड. वेरी वेरी फास्ट. इतना स्पीड दोगे तो ही तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट कर पाओगे. ओके, सो spacecrafts which are sent to the moon or other planets to have their, okay, I'm going to read that sentence again. I don't think I read that correctly. The spacecrafts which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity. जो कोई भी हम spaceships मून या फिर दूसरे प्लैनेट से भेज रहे हैं, उनका इनिशियल वेलोसिटी इतना फास्ट होना ही चाहिए, वरना वो लोग अर्थ के बाहर नहीं जा पाएंगे. अर्थ के थोड़े से ऊपर जाके वापस नीचे गिर जाएंगे अगर उतना स्पीड नहीं दिया तो. कितना स्पीड? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, they have to have the initial velocity larger than escape velocity so that they can overcome Earth's attraction and can travel to these objects. बस उतना नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. सिर्फ उतना होगा तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाके वो बस वहां पे रह जाए. उसके आगे भी तो जाना है, मून तक जाना है, मार्स तक जाना है, तो उससे थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा. तो उनके पास होना ही चाहिए इतना एस्केप वेलोसिटी. तो इसलिए इसके पीछे इतना बड़ा बूस्टर लगाते हैं लोग, क्योंकि उस स्पीड तक पहुंचना है. 11.2 kilometers per second. That's how fast it is. And just imagine अगर ये इसमें एस्ट्रोनॉट कोई बैठा है, तो इस एस्ट्रोनॉट को उतने ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करना है. जस्ट इमेजिन दैट. हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं, मोस्टली इट इज गोइंग टू टच व्हाट 100 किलोमीटर पर आवर. इफ यू सिट इन एन एरोप्लेन, इट इज गोइंग टू टच हाउ मच? एरोप्लेन यू विल टच अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर, राइट? ज्यादा से ज्यादा फाइटर प्लेन्स वगैरह 1000 किलोमीटर पर आवर. 60 मिनट्स में 1000 किलोमीटर. ओके, 1000 किलोमीटर पर आवर. बट ये जो स्पेसशिप है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर. सो दैट्स सुपर सुपर फास्ट. तो उन सैटेलाइट्स, उन एस्ट्रोनॉट्स को इतने फास्ट स्पेसशिप पे बैठना पड़ता है. दैट्स वेरी स्कैरी एंड दैट्स वेरी डेंजरस आल्सो. So that's about escape velocity. Okay, let's solve 2 end of chapter questions before we end this learning session. First question is, explain why the value of g is 0 at the center of the earth. You'll know the answer to this question. A very similar question was asked in, I think, July or June exam of 2019. 2019 के board exam में question पूछा था. So I know that you all know the answer. We have discussed this in the last learning session. Are you able to put that in 4 points in logical order and in simple English in your own words? That's what you have to check. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and put the answer in 4 simple, easy to understand points. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you are done writing down the answer in 4 simple points. Now we can check the answer. We can discuss the answer. Point number 1, you just give the formula for small g. Okay, so the acceleration due to gravity, which is small g, on Earth's surface is given as small g is equal to gm by r square. And the value of g depends on 2 things. First is mass m of the Earth and radius r of the Earth. Mass of the Earth and radius of the Earth. ये जो g है वो तो constant है, वो change नहीं होता कभी. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या किया हमने? वी हैव डिस्क्राइब द फॉर्मूला ऑफ जी और किस पे डिपेंड करता है स्मॉल जी, इसके बारे में बात किया. दैट्स माय इंट्रोडक्शन ऑफ सॉर्ट्स. नाउ माय सेकंड पॉइंट. एज वी गो इनसाइड द अर्थ, our distance from the center of the earth decreases and no longer remains equal to the radius of the earth. ऐसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, राइट? सो जो r का वैल्यू है वो कम हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है. दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. Along with this, along with the distance, the part of Earth which contributes towards the gravitational force felt also decreases, decreasing the value of m. This how I told you कि जैसे तुम अंदर जा रहे हो तो तुम्हारे नीचे जितना अर्थ है वो कम हो गया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर थोड़ा अर्थ आ गया,
तो मास भी कम हो जाएगा। मास कौन सा कंसिडर करोगे, जो तुम्हारे पैरों के नीचे है, और तुम्हारे पैरों के नीचे जो अर्थ है वो कम हो गया क्योंकि तुम नीचे चले गए, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा मास आ गया। दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द थर्ड पॉइंट। तो तुम्हारा मास कैपिटल एम भी कम होने वाला है, मास ऑफ अर्थ। तुम्हारा तुम्हारा डिनोमिनेटर भी कम होने वाला है, तुम्हारा न्यूमरेटर भी कम होने वाला है। हेंस as a combined result of the change in r and m, the value of g becomes zero at the center of the earth, right? क्योंकि तुम्हारा न्यूमरेटर में मास भी कम हो रहा है, यहाँ पे सॉरी, तुम्हारे न्यूमरेटर में मास भी कम हो रहा है यहाँ पे, और तुम्हारे डिनोमिनेटर में रेडियस भी कम हो रहा है। सो न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, उस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से तो जब तुम सेंटर पे पहुंचोगे अर्थ के, तो तुम्हारा स्मॉल जी जीरो हो जाएगा। ओके, दैट वाज योर आंसर टू द end of chapter question number 1 for today's learning session. Okay, let's move on to the second question. Answer the following questions. E question: if the value of g suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? अगर small g का value double हो गया, तो कोई भी चीज उठाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगेन इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिमिलर टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, टू यूज द फॉर्मूला ऑफ जी टू एक्सप्लेन। और यहाँ पे क्या पूछा है? विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट। हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी से क्या रिलेटेड है? वेट। तो वेट के बारे में भी बात करना पड़ेगा। सो दैट्स योर हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन I know that you all know the answer, but are you able to write an answer from whatever you actually know in your brain in 4 simple points in your own words, which explains the answer in a simple way? That is the skill you have to develop. Okay, that is what you have to practice, and the more you practice, the better you will get at. So again, I'm going to wait for 5 seconds. Actually, I'm going to drink some water, and till the time I drink some water, I want you to pause the video here and write the answer in your notebook by yourself, and then we will discuss. Okay, okay, I'm done drinking my water. I hope you pause the video and are ready with your answer. Let us discuss the answer. Okay, so point number 1, as I told you, I had given you the hint. You have to talk about weight, क्योंकि कुछ उठा रहे हो, राइट? उठाने के लिए मुश्किल कब होगी? जब वेट इंक्रीज होगा। So the weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. वेट क्या होता है? कितने फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम वेट बोलते हैं, राइट? सो गिव द डेफिनेशन ऑफ वेट एंड उसका फॉर्मूला बता दो। वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। ये वेट का फॉर्मूला है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फॉर्मूला उसको एक्सप्लेन कर दिया सेकंड पॉइंट में। वेट किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो इस फॉर्मूला को सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। If the value of g doubles, the force with which the earth attracts the object also becomes twice. Right? अगर यहाँ पे small g डबल हो गया, तो ये जो फोर्स है जिससे अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, सो बिकॉज RHS में 2 हो गया तो LHS में भी 2 लाना पड़ेगा। सो अगर g डबल हो गया तो f भी डबल हो जाएगा। सो f डबल हुआ यानी फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, वो भी डबल हो गया, राइट? Hence, your conclusion will be, thus the object becomes twice as heavy, making it harder to be pulled along the floor. इसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो डबल हैवी हो जाएगा, और डबल हैवी हो गया तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए जमीन से। Okay, that was your answer to the second end of chapter question for this learning session, and the last end of chapter question for this learning session. Okay, so that is it. Just check whether you've accomplished today's learning objective or not. Can you explain me gravitational potential energy? Do you remember the formula for gravitational potential energy? Do you know why do we take gravitational potential energy as negative? If you can answer these questions, then you have achieved today's first learning objective. Can you derive the expression for or formula for escape velocity? And can you explain me the concept of escape velocity? If yes, then you have achieved today's second learning objective. Remember, escape means भाग जाना. Okay, किससे भाग रहा है? Object अर्थ के gravitational pull से. So that is it for this learning session. I hope you enjoyed. I hope you understood everything. We are almost done with the entire chapter.
in the next 1 or 2 learning sessions, what we're going to do is we're going to discuss more problems. I'm not going to solve all the problems. I'm going to solve a few problems. The remaining problems you're going to study by yourself. So the next 1 or 2 learning sessions will discuss only problems in this chapter. Okay, numerical problems. So that is it for this learning session. I hope we see each other in the next one. Till then, bye and peace.